Machephy Eduworld. Good evening, students. We'll do some questions on work power energy chapter, and today we'll be solving questions that have been coming in recent years. So, ये इस बार का क्वेश्चन है JEE Mains 21 में आया था. Solve it. Very easy question. ये NET type का question है, numerical answer type. Find the nearest integer. कुछ अगर क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर लिया कर रहा हूँ सर. There is only one object that is doing work, and उसकी वजह से kinetic energy में change आ रहा है. That is due to this spring. So we'll use this work energy theorem. So work done by spring force will be equal to change in kinetic energy. Work done by spring कितना हो जाएगा? It is getting compressed. So half of K. Initial extension was 0. Final extension, let us say, is X. That is equal to half. Final velocity is 0. Initial velocity is V, so half mv square. So you can calculate from here. Let us see what comes. K की value given is 100. X square, negative cancel out हो जाएगा. Mass is 4 kg, velocity is 100. यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे तो 2 मीटर आ जाएगा. या सर क्वेश्चन 1 में एलोंगेशन का वैल्यू पूछा है कि एलोंगेशन के बाद रिजल्टेंट स्प्रिंग का लेंथ. ये कंप्रेस्ड तो स्प्रिंग मतलब पूछा है, लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग. इतना कंप्रेशन हुआ है. हाँ, हाँ x की जगह कुछ और लिख सकते हैं, पर कंफ्यूजन हो रहा है तो. बट x इज द कंप्रेशन, तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग कितना हो जाएगा? 8 minus 2. ठीक है. यस सर. योर आंसर विल बी 6 मीटर. आंसर विल बी 6 मीटर. That is the value of x. Shagir, your solution is correct. Okay, try the next one. सर आंसर 10 आता है. Yeah, 10 is 10 correct. meter per second. Yeah, that is correct. Try question number 3. JEE मेंस में इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट पता है तो बहुत इजीली सॉल्व होते हैं. वहाँ पे स्पीड मैटर करता है JEE मेंस में. क्वेश्चन सारे इवेंचुअली सॉल्व हो जाते हैं, इतने इजी होते हैं अगर पढ़ा है तो. ऑफ कोर्स वैष्णवी, क्वेश्चन 3 हो जाए तो टेल मी द आंसर. Sir, 346. Three 46 is correct. Very good. Aditya and Nirmit, are you getting this answer? Sir, actually I'm not able to figure out the value of V0. Okay.
लाइक मेरा फाइनल इक्वेशन आया कि L इक्वल्स 5v0 square/80. Vaishnavi, would you like to explain कैसे solve किया first? What was the concept here? सर वी नॉट कट जाता है, वो दोनों इक्वेशन बनता है. We not cancel out हो जा रहे. हाँ. Okay, tell me the equation. क्या equation था? Half m v naught square is equal to mg x by 2 plus coefficient of friction mg root 3 by 2 into x. So, what is this? Work done by friction? Yes, sir. And this is work done by gravity. So, you are Yes. assuming कि x distance आगे move कर रहा है. That is your x. Yes, sir. Then second equation. Half m v naught square by 4 Yeah. is equal to mg x by 2 minus mg root 3 by 2 into x. Yeah. Sir, x is a coefficient of friction, right? Vaishnavi, tell me what is x here? यहाँ पे mu mg भी आएगा क्या? Mu mg root 3 by 2 like this. Okay. Yes, sir. Mu mg root 3 by. So final kinetic energy is 0. सर मेरा भी यही आ रहा है. Same equation आ रहे हैं. हाँ बट मैंने x की जगह L ले लिया. हाँ हाँ. हाँ बस वही. इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं. 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दो इक्वेशंस आ जाएंगे. आप एम नॉट स्क्वायर को इक्वेट कर सकते हैं. सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट x लिया हुआ है मैंने. Either we can calculate it or we can just ignore it. See, ये long method तो है, इसे solve कर सकते हैं. There is a shorter method. We know कि the loss in kinetic energy, let's suppose this is the first state, और second time जब आएगा तो इसी point पे v0/2 से नीचे जा रहा होगा. So अगर ignore कर दे ये ऊपर जाना और नीचे जाना, we can just ignore it because we know कि friction ने दो बार dissipative work किया है. So final kinetic energy is half mv0 square by 2. mv0 by 2 का whole square, और initial kinetic energy is half mv0 square. That will be equal to work done by friction, that is minus mu mg root 3 by 2 into x. अगर x distance travel किया है तो. ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन आ गया. अभी v0 को रिलेट करना है x से. So v0 डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है विद एक्सेलरेशन हाउ मच? ऊपर वेलोसिटी है v0, नीचे जो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा? mg sin थीटा. और फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा होगा, दैट विल बी mu mg root 3 by 2.
तो नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दैट वी कैन फिगर आउट, दैट आल्सो वी कैन। एक्सेलरेशन आ जाएगा g/2 plus g√3/2 in the downward direction, mu g√3/2, and इतने एक्सेलरेशन से ये वेलोसिटी 0 हो रही है, so we can write this v0 square is equal to final velocity is 0, 0 square is equal to v0 square minus 2ax। एक और रिलेशन आ जाएगा x और v0 में, so v0 square is equal to 2, acceleration is g/2 plus g√3/2 mu into x। तो सॉल्व कर सकते हैं, m तो कैंसल आउट भी हो जाएगा यहाँ से, और v0 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, पहले वाले से भी आ जाएगा। v0 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, v0 स्क्वायर यहाँ पर क्या फर्स्ट इक्वेशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करेंगे। ग्रेविटी ने जितना पॉजिटिव वर्क किया फिर उतना ही नेगेटिव वर्क कर दिया, क्योंकि सेम पॉइंट पे आ गया ना, इट कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन। सर बट फ्रिक्शन भी पहले नीचे लग रहा था फिर ऊपर। फ्रिक्शन हमेशा डिसिपेटिव वर्क करता है, फ्रिक्शन का वर्क हमेशा इसमें डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक बार फ्रिक्शन का फोर्स नीचे लग रहा था, एक बार ऊपर लग रहा था, तो वो दोनों बार में नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। बट ग्रेविटी देखा जाए तो एक बार पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एक बार नेगेटिव वर्क कर रहा है। उस ग्रेविटी वाला फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। सर ये भी और क्लियर होगा कि हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट क्लास में, और मे बी एट द एंड ऑफ द क्लास, देन और क्लियर होगा। बट ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स अगर वापस सेम पोजीशन पे आ गए तो नेटवर्क जीरो होता है। बट फ्रिक्शन का वर्क हो गया, ड्रैग का वर्क हो गया, या कोई एक्सटर्नल पर्सन वर्क कर रहे हैं, तो ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। इनमें वापस उसी पोजीशन में आने पे वर्क डन जीरो नहीं होता। ओके सर। तो अभी सॉल्व करके देखना है निर्मित टाइम। टेल मी 346 आ रहे हैं। Aditi, you got the answer for question number 4? So still solving. सर आंसर 577 आ रहा है। क्वेश्चन 4 का या 3 का? 3। Sir, 150 Newton. 150 is correct for question number 4. Aditi, question number 3 का आंसर आ गया था? हाँ sir. ओके। निर्मित यहाँ पे ट्वाइस ऑफ म्यू mg√3/x होगा, क्योंकि एक बार ऊपर गया फिर एक बार नीचे गया, दोनों टाइम फ्रिक्शन लगेगा। So I multiplied it by 2. Now this is correct. Okay. फोर्थ क्वेश्चन में मशीन जो फोर्स लगा रहा है उससे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज 0.2। So work done, total work done, sum of work done is equal to change in kinetic energy. So work done by machine हो जाएगा force into displacement. Displacement given is 0.2 and it rises to a height of 20 meter. तो ग्रेविटी ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी वर्क करेगा, इस पे नेगेटिव वर्क करेगा, सो माइनस mg into 20। फोर्स ये जो F लग रहा है ये 0.2 के लिए लग रहा है। क्या सर बट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर नहीं होंगे एक दूसरे के? नो,
ये अपवर्ड फेंक रहा है ना ये मशीन के अंदर, अभी रेस्ट में है, उसके बाद वर्क बट किया। हाँ, वो पार्ट तो ऐसा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना। पार्ट अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं देन it can be directed in a way such that it goes in the upward direction. Like this, ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यस सर। सो इनिशियली भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है फोर्स लगाने से पहले, बाद में भी नहीं है। That would be just m g divided by point. So answer will be 150. कुछ अगर क्वेश्चन 5 सॉल्व कर लिया, नहीं सर कर रहा हूँ। ओके, हो जाए तो देन टेल मी द आंसर। डेट विद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। यस सर। कितना आंसर आ रहा है? √20 20। √20 एंड अदिति कितना आंसर आ रहा है? सर सेम आ रहा है। √20। हाँ सर। क्या निकाला? √20 इज व्हाट? दिस काइनेटिक एनर्जी। सर वेलोसिटी। अच्छा अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है ना। गलती से वेलोसिटी फाइंड कर दिया। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। तो सर 10। हाँ 10 करेक्ट। Vishak, if you're facing any difficulty, then ask. नहीं सर मैंने भेज दिया था आपको। Okay. हाँ करेक्ट। Okay. Try questions number 6 and 7. Aditi, what's the answer for this question number 6? सर एक मिनट। And people who are solving question number 7, remember work done can be calculated by f dot dr का integration. F dot dr का integration. F is given, but dr की जगह लिख सकते हैं dx I cap plus dy j cap. That will give you minus x dx का integration plus y dy का integration. From x चेंज हो रहा है 1 से 0 और y चेंज हो रहा है 0 से 1. Y का चेंज देखें, y is changing from 0 to 1, x is changing from 1 to 0. If you integrate this, you'll get the answer. सर ऑप्शन सी 5250 जूल। 5250. निर्मित कितना आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का? I'm still trying. Okay. Question 7 हो। क्वेश्चन 7 हो गया। ठीक है। हाँ।
Okay, solve question number 6. So in question number 6, person is pushing the box on a rough platform and he applies 200 Newton over a force for 15 meter. And he tired and reduces his force to 100 Newton linearly. So what we can do, we can easily draw the graph of F versus X. So initially force was 200 or constant tha. That was up to a distance of 15 meters. Then he gradually decreases his force linearly will be 200 Newton. Total distance 30 meters. So we know that work done is integration of F dot dx means Fx graph the area. That will give us the work done. अदिति ऐसे ही सॉल्व किया क्या? हाँ सर. Okay, good. तो ये आ जाना चाहिए 5250 joules 3000 plus 2250. वैष्णवी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. नहीं sir, I'm studying. Okay, is this concept clear? What I have written here? Should I elaborate more? B option. Nirmit, one answer आ रहा है? Yes, sir. Okay, good. तो ये वर्क भी पॉजिटिव हो जाएगा. 1 से 0 ले रहे हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पॉजिटिव आ जाए. सो हाफ हाफ दोनों में आएगा तो दैट विल बिकम इक्वल टू 1. इसको समझ में ना आ रहा हो देन टू आस्क. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ IIT JEE and we already done it in class, so I don't think it's बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये सॉल्व करने में. तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया सर निकल रहा है बस 1 मिनट. ओके. Yeah, Nirmit, your answer is right. सर ऑप्शन बी होगा. Option B is correct. Those who have done question number 8, try question number 9 and 10. In question number 9, force is given as a function of time. पहले force को as a function of x निकालना पड़ेगा. Aditi, can you tell me question number 9 का आंसर क्या आ रहा है? Mass 1 kg, so acceleration will be just 6 p. So velocity will be 3 square. Displacement will be ka q.
So we do integration of f dx. Sir, can you explain this one? See, force is mass into acceleration. That is equal to sir. 60. Mass 1 kg तो acceleration 60 आ जाएगा. फिर acceleration को लिख सकते हैं dv by dt. यहाँ से velocity आ जाएगा. So when t is equal to 0 पे velocity 0 था because it is starting from rest. T is equal to t पे velocity v था. So v is coming as 3t square. Velocity is dx by dt. So हमें निकालना है f dot dx, but हमें फंक्शन दिया है टाइम का. तो dx को लिख सकते हैं क्या 3t square dt. फोर्स की वैल्यू 60 होगी और dx यहाँ से आ जाएगा, that is equal to 3t square into dt. So dx भी replace हो गया and this can be integrated 18 into t cube. We need for the first 1 second integration करना होगा 1 second के लिए. Sir, answer 4.5 joule आता है. Yeah, 4.5 is correct. Vaishnavi, you got the answer for question number 10? Nice, sir. Nirmit? I'm still See, same concept लगाना है. मुझे चाहिए f dot dx, but यहाँ पे force is a function of velocity. So minus kv square dx. तो अगर मुझे dx dv के टर्म्स में मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा. Either I can do that, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं. So f is equal to ma minus kv square. Mass is 10 raised to minus 2. बाद में पुट कर लेंगे. So acceleration is dv by dt. So dv by v square, that gives me minus k by m dt. When time is 0, initial velocity is 10 meter per second. And this is given as v naught. Note it. When time is t, let us say velocity is v. So 1 by v square का integration हो जाएगा minus 1 by from v naught to, that is minus k t by m. 1 by v naught minus 1 by v equals to k t by m. From here I can write 1 by v is 1 by v naught minus kt by m. That gives me velocity as mv naught divided by m minus v naught kt. That is one way to solve it. Velocity को dx by dt लिख सकते हैं और हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. Velocity as a function of time t पता चल गया. This is the long method.
Try it. We'll also find a short method थोड़ा attempt करने के बाद. See that there is a shorter method. Now another way to do it, we know that की final velocity, its energy is this. So और कोई energy तो possible है नहीं, because it is just moving in a fluid. So सिर्फ kinetic energy possible है. So we can calculate the final velocity. अगर velocity, kinetic energy is going from, kinetic energy is changing from half mv naught square half to 1 by 8 mv naught square. इसका मतलब velocity हो गया v naught से v naught by 2. Velocity is going from v naught to v naught by 2, and we have got this relation. So 1 by v naught minus v की जगह put कर सकते हैं v naught by 2, that is equal to k. Time is also known, that is 10 second by m. From here we can find our k. The negative sign actually. That will give me 1 by v naught equals to 10k by m. This will result in k as m by v naught into 10. Mass is 10 raised to minus 2, v naught is also 10. ये आ जाएगा 10 raised to minus 4, of course in SI unit. So D option should be correct. So वर्क डन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वर्क डन निकाल के भी करते तो भी सेम आंसर आता. Because the energy here is only kinetic energy, so we can conclude that velocity becomes half, because kinetic energy becomes 1/4. So if mass is not changing, but kinetic energy is becoming half, 1/4, that means velocity is becoming half. सर बट वर्क डन क्या होगा? वर्क डन के लिए फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा. Either that, or you can directly write की energy given है ना 1 by 8 mv naught square. So work done will be equal to change in kinetic energy से भी निकाल सकते हैं. Okay. Okay, let us do next question. The question is like this. There is a wall and ground. So wall पे is that there is a attachment, frictionless attachment, जिसपे एक spring block system है. The mass of the block is 100 grams, and the spring constant here is 100 Newton per meter. Now spring को compress करते हैं. This height is given as 2 meter. Spring को compress करते हैं by 5 centimeter. Spring is compressed by 5 centimeter. Then you have to find what will be the horizontal displacement of the block. इसे compress किया 5 centimeter से, फिर release कर दिया, तो फिर इसके पास kinetic energy आ जाएगी. Find the horizontal displacement of the block. तो यहाँ पे kinematics और work energy theorem दोनों लगाना है. Find horizontal displacement when it hits the ground. So in this case, you can easily find the horizontal velocity. What's the value of horizontal velocity when system leaves this spring? Sir, can we do like this?
total work done equals half into m into a horizontal velocity का square. Yeah, work done by spring, that will be equal to change in kinetic energy. So and work done by gravity. अभी see, जब ये नीचे जाएगा तो its kinetic energy will increase. You cannot find the distance at which horizontal distance में find out नहीं कर सकते, उसके लिए kinematics use करना पड़ेगा. So just यहाँ से जब leave कर रहे हैं तब की velocity find out करनी है, थोड़ा टाइम बाद velocity कितनी हो. And then you'll use kinematics कि 2 मीटर fall करने में कितना टाइम लगता है, in that time कितना आप forward move कर रहे हैं. That is correct. What is the velocity that you are getting at this point? Ux is 0.5 into root 10. 0.5 into root 10, sure. Minus half k x is 500 into 500, that is 0. Final velocity is something. Positive word, half m is 100 grams, so 0.1 v square. 100 goes away, 200 goes away. Is equal to 2 root h upon g, no? 2h by g. That is 1 by root 5. Horizontal distance will be root 2 by 5. Into, yeah, 1 meter is the correct answer. That was question 11. Question 12 भी हो गया क्या? Question 12 में block या यहाँ से release कर रहे हैं, ये वाला surface frictionless है. But ये horizontal वाला part यहाँ पे friction है, and that length is L. Friction coefficient 0.4 है. You have to find the value of this length such that block comes to rest at point C. So this distance should also, this height should also be given. This height is given as 0.4 meter. So 2 meters से 0.4 meter height तक जा रहा है. So calculate the value of L. Let's check. So the gravitational potential energy will go into feeding the work done by friction. And initially kinetic energy 0 था, final kinetic energy 0. M G H will be 2 minus 0.4. From this level it will be 1.6. That is equal to minus that minus mu M G into L. This should be 0. From here you'll get L as 4 meter. फोर मीटर आना चाहिए, राइट सर? 4 ही आ रहा है मेरा. हाँ करेक्ट है. ठीक है, ट्राई क्वेश्चन नंबर 30. So question number 13 here, again the gravitational potential energy work done by gravity will be lost into work done by friction. So we can write mgh minus mu mgl is equal to 0. That is total summation of work done is equal to change in kinetic energy. A पे भी kinetic energy 0 है, B पे भी kinetic energy 0 है. M will just get cancelled out. GH, G will also get cancelled out. H is 1. G is 0.2 and L. So L is coming as 5 meter. Now next part of the question is, if L equals to 2 meter, find speed of block at B. If L is equal to 2 meter,
find speed of block at B. This time at point B there is kinetic energy. So mgh minus mu mgl will result in a final kinetic energy at B. Surprisingly, this speed does not depend on the mass. When this length also does not depend on the mass. Take any mass and it will be the same. From here you'll get B as 2.3 meter per second. That will be the speed of particle, speed of the mass at point B. So this was the application of work energy theorem. In next class we'll start with the conservative and non-conservative forces, and before that we'll be talking about potential energy. अभी तक सिर्फ kinetic energy और work के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए हमने work energy theorem बोला. Now later we will see there are some types of energy which can be associated with the arrangement of the system, and that is known as the potential energy. That will be the topic of next class.